Hello everyone. Today we will study about the French Revolution, which is yet another chapter, integral chapter of class 9th history. This chapter is said to be the most important of all because it forms the base to the upcoming chapters further. If we talk about the Russian Revolution, then too it forms the base. तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है ये कई बार 9th स्टैंडर्ड में बच्चों को ऑल ऑफ सडन जब वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है उन्हें ये चैप्टर पढ़ने में. यूजुअली जब हम देखें तो हिस्ट्री टिल क्लास 8 इज अबाउट इंडिया ओनली. हमने एंशियंट इंडिया पे जहां पर एंड अप किया था, अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहां start करेंगे. This French Revolution we are going to study for contemporary world. So basically we need to see the differences between French Revolution and India's struggle for freedom, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. अगर आप इन दोनों रेवोल्यूशंस में एक बेसिक डिफरेंस साइट करें तो इनका एक टाइम पीरियड अगर हम बेस लें तो वो बेसिक डिफरेंस है. इट वाज नियर अबाउट हाफ ऑफ द सेंचुरी प्रायर French Revolution started. It was in 1789. In 18th century, when they began with French Revolution, when people of France, they began a revolution against the monarch. वहां के जो राजा थे किंग लुई 16. So then this was against the monarch because people now never no more wanted monarchical rule in their country. Rather they wanted a democratic setup, they wanted a constitution. Towards the end they got a constitution, but then partially they got all the rights. Like in India, when we got our constitution in 1950, we got all the rights. We got universal adult franchise, we got suffrage for all, for women, for people above the age of 18 years. So we got it all together. But in France, when constitution was granted, so it was not granted in one go. लोगों को एक बार में ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रॉपर सेटअप कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मिल पाया फ्रांस में. तो यही एक बेसिक डिफरेंस है इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि हम लें. तो हमारा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 में और फ्रांस में ये सब स्टार्ट हुआ था 1789 में. 1789 में एक ऐसा इंसिडेंस दिया हुआ है हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक अगर हम एनसीईआरटी देखें तो इस इंसिडेंट को लेकर ये चैप्टर बिगिन होता है. द इंट्रोडक्टरी पार्ट बिगिंस विद द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन 1789 and then further we need to study more about the revolt, what all things happened. Okay, if we see here in this chapter, the first incident which is given, this is an incident of firing all around. People are all surrounded everywhere. People in France, they are actually fighting. There's the situation of turmoil. बहुत ज्यादा उथल पुथल है सब जगह. People are wanting to fight. लोग हर जगह से arms and ammunition capture कर रहे हैं. Like this scenario is on morning 14 July 1798. जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं तो हमें लास्ट सीन हमेशा एक दिखाया जाता है and then it is as a trailer when we are shown with the final scene, and then we keep on imagining that what actually happened prior to this. इससे पहले ऐसा क्या हुआ होगा जो हम ये सीन, ऐसा टर्मोइल, ऐसी सिचुएशन फ्रांस में देख रहे हैं. This was the day 14th of July in 1789. People in France gathered at a place and they started firing. They started leaving fire on the people who were there as in charges of king. If we see the troops were all fired and near about 7,000 men, they gathered near Bastille. अब Bastille क्या है? Bastille एक jail है. It's a prison. It's a prison in France wherein these people who disagreed with the king, disagreed with the monarch, were kept inside. So what these people did, इन लोगों ने आकर वहां फायरिंग स्टार्ट कर दी. जितने भी आर्म्स है, जितने भी एम्यूनिशन है, आर्म्स मतलब हथियार, वेपन्स, और एम्यूनिशन मतलब द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू रीफिल आर्म्स, जैसे बारूद, उसको रीफिल किया जाता है, गन्स को रीफिल किया जाता है जिनसे, बुलेट से, तो वो है एम्यूनिशन. तो लोगों को सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन कहां से मिल पाएंगे? डेफिनेटली एक प्रिजन से. सो ये सारे लोग जाकर एक प्रिजन में अटैक करते हैं which is known as Bastille, and from there they capture all the arms and ammunition and they start firing on the troops. वहां पर कमांडर पे भी वो फायर करते हैं and then where they destroy things, सब पूरा प्रिजन डिस्ट्रॉय हो जाता है. और फिर जो भी
डिस्ट्रक्शन होता है उस प्रिजन में से, जो भी ब्रिक्स हैं या फिर जो भी लेफ्ट ओवर है, वो लोग अपने पास रख लेते हैं एज अ सोविनियर, सो दैट इन फ्यूचर दे कैन रिमेम्बर, एक अपने निशानी की तरह रख देते हैं ताकि हम फ्यूचर में ये देख सके कि in 1789 this kind of incident also took place. So then this turmoil everywhere there's something or the other happening in the town. So why, what is the reason behind it? We are going to see very soon what was the reason behind people gathered at Bastille and firing and releasing the prisoners. So now let's see the reason why this incident took place in Bastille. So basically the reason was King monarch. Okay, King Louis XVI, who was the monarch, he was from Bourbon family. वो उनका clan था Bourbon. So he was from a Bourbon family, and when he was 20 years of age, he married to the Princess of Austria. या नेबरिंग कंट्री, उनकी एक नेबरिंग कंट्री है, तो वहां की प्रिंसेस से he married at when he was at the age of 20 years. So then after when he married, he got all empty treasuries. The accounts were totally empty. So ये सब क्यों हुआ था? वहां के फ्रांस के अकाउंट्स और सब सब ट्रेजरीज सब खाली क्यों थे? वो इस वजह से क्योंकि वहां के एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा था। जो भी मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर होता था, जो भी राजघराने में जैसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर होता था, वो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर था। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्च होते थे वहां पर किंग्स को मेंटेन करने में, अपने किंगडम्स मेंटेन करने में। एवरीवेयर द मेंटेनेंस कॉस्ट वाज क्वाइट high. So this is the reason Louis XVI received an empty treasury when he ascended as a king. So then this is the reason why people all across the France, they even suffered. Also because they had to fight a war, they had to indulge, people in France, the military of the France, they had to indulge into wars. ये बहुत टाइम से अमेरिकन कॉलोनीज को अपने ब्रिटेन से बचाने के लिए ये वॉर उनको सपोर्ट कर रहे थे. इट हैड सपोर्टेड अमेरिका टू फ्री देयर कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटेन. ब्रिटेन इनका एक कॉमन एनिमी था, है ना, दुश्मन, एक ही दुश्मन था इनका. तो इन्होंने अमेरिका को हेल्प किया ताकि ये अपनी कॉलोनीज उनसे फ्री करवा सकें. Like India was a colony under Britishers, so Americans also had the same scenario. And in between this, they had lost lots of their currency. इनकी currency क्या है? इनकी currency है liver. They actually measure it in livers. Right now, it is abandoned. This currency is not under use since 1789 itself. Now let us see how their society was arranged. Just like India, our Indian society was also arranged according to Varna. It was Varna-based society. So there also in France, it was the society based on feudal system of privileges. अगर हम समझे feudal system of privileges क्या है, you can clearly see over here, it is written feudal system of privileges. So then this feudal system is based on the birthrights. If a person, right now you can see feudal pyramid of power in front of you. At the lowest rung, सबसे नीचे जो हम देखेंगे वो है peasants, peasantry class. Peasantry class always belong to the lowest rung. They were underprivileged. जैसे हमारे यहाँ भी 4 वर्ण थे इंडियन सोसाइटी में, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस. हमारे यहाँ 4 वर्ण होते थे. So here also they had three classes of people. We are going to see what kind of classes and how they were divided. प्लीज इस स्लाइड को ध्यान से देखें. इस स्लाइड में हम देखेंगे तीनों स्टेट्स. जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में वर्ण थे, यहाँ पर होते थे स्टेट. सो फर्स्ट स्टेट हैड क्लर्जी. अब क्लर्जी बहुत ही प्रिविलेज स्टेट था, बहुत ही प्रिविलेज स्टेट था. क्यों? बिकॉज क्लर्जी वो लोग थे जो हमेशा चर्च में रहते थे, एंड चर्च में उनको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते थे. दीज एडवांटेजेस वर अ काइंड ऑफ डोनेशंस आल्सो गिवन बाय किंग्स. सो मेनी अ टाइम्स किंग्स आल्सो यूज्ड टू गिव ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू द चर्चेस. तो यहाँ पर इन्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज था. क्लर्जी क्लास सबसे टॉप मोस्ट थी. अगर हम पिरामिड वाइज देखें तो सबसे टॉप मोस्ट थी. इट लाइक वी हैड ब्राह्मण्स, सो हियर आल्सो क्लर्जी वाज एट द टॉप मोस्ट रंग. सो देन दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. इन्हें किसी भी टाइप के टैक्सेस नहीं पे करने होते थे.
This is the biggest advantage. Then second state we have is of nobility. Nobility comes from nobles. जो भी nobles होते थे ना king के court में, जो king के court में nobles बैठते थे जिनका decision बहुत important होता था king के लिए, तो ये nobles पे बहुत ज्यादा advantages होते थे, इन्हें भी बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते थे. These were rich nobles owing lands. They had lands also. They were again exempted from paying taxes. जब taxes नहीं पे करने तो ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इन ग्रुप के लिए. They enjoyed services from peasants obliged to work in house and fields. To serve in the army, this was the basic task. जैसे हमारे यहाँ क्षत्रिय जो होते थे, क्षत्रिय को usually warriors treat किया जाता था. So यहाँ पर भी nobles also were given some फंक्शन. बट ये दोनों क्लासेस जो थे, ये दोनों स्टेट हैं प्रिविलेज्ड स्टेट्स. अब हम आते हैं थर्ड स्टेट पे, जो फॉर्म करता है 90%, 90 to 98% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस. ज्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज भी यही स्टेट है. इस पर्टिकुलर स्टेट के पीपल को लोगों को बहुत कम राइट्स मिलते हैं, जैसे कि उन्हें टैक्सेस पे करना पड़ता है. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही था, दे हैड टू पे टैक्सेस. और एक टैक्स नहीं, कई टैक्सेस पे करने रहते हैं इन्हें. पहले हम देखें कि इस स्टेट में कौन कौन आते हैं. इस स्टेट में आते हैं रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, सारे प्रोफेशनल्स आते हैं. देन पिजेंट्स ऑल्सो, पिजेंट्स एंड आर्टिसंस, सो आर्टिस्टिक जो बनाते हैं, पॉटरी मेकिंग एंड ये सब जो उनका ऑक्यूपेशन होता है. देन स्मॉल पीजेंट्स, वेरी स्मॉल पीजेंट्स जिनका खुद का लैंड भी नहीं होता है. देन लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स. तो ये जितने भी लोग हैं ये बहुत ही अंडर प्रिविलेज लोग थे फ्रांस में. इनकी ही वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है स्पार्कल हुआ था, स्पार्क आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. बिकॉज दीज पीपल नेवर गॉट देयर राइट्स. दे हैड टू पे टैक्सेस, दैट टू ओवरबर्डन टैक्सेस. नाउ लेट्स सी व्हाट आर ओवरबर्डन टैक्सेस दैट दे हैड टू पे. यहाँ पर उन्हें तीन तरीके के टैक्सेस पे करने रहते थे. फर्स्ट इज टिथ, then tail, and third is indirect taxes. Tithe, as you see, is the 10th part. The churches used to levy this on peasants. जो 1/10 part है ना, वो हमेशा इन्हें churches को देना रहता था. किसे? The third state को. Then next is tail. Tail जो कि directly state को देते थे, directly king को देते थे, directly अपने monarch को देते थे. तो ये एक अलग टैक्स हो गया. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जो हम भी पे करते हैं. सपोज हम एक सॉस की बोतल लेकर आए या फिर टोमेटो केचप हम लेके आए, तो उसमें it includes all the taxes. So when it includes all the taxes, this is an indirect tax which we have to pay on the extra value added of the good. So here also people had to pay taxes on the articles also, जैसे हम GST पे करते हैं currently. So at that time also people had to pay indirect taxes. So then these kind of taxes were taken up on salt or tobacco, as you can see. So burden of all of these financial activities was simply borne by third estate. So this was a burdensome task for them, and they had to continue with the same. They had to pay taxes also. They had to continue with all the burdens of third estate. This cartoon very clearly shows, very clearly depicts. जब हम cartoon images देखते हैं, और ये cartoon images हमें CBSE question papers में भी कई बार मिलते हैं, whether you talk about these cartoon images from history or political science. मैं अपने next video में political science की भी cartoon videos, cartoon images पे या फिर questions share करूंगी, जिससे आपको और clear हो जाएगा how to answer these image picture based questions that usually come up in CBSE papers. So then here they will either ask you to name the symbols, what is it symbolizing, and they will ask you for the reason also. Why do you think this person is tied with chains? So you have to tell why this person is tied with chains, because this person reflects third estate, and this third estate has to bear the burden of the other two estates. जो बाकी के दो स्टेट्स हैं, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनका पूरा बर्डन थर्ड स्टेट पे पड़ता है. इसलिए हम इस थर्ड स्टेट को पर्सोनिफाई किया गया है. Your third state is personified, wherein the person is also wearing chains in his legs. So then this is simply the personification and how to answer picture-based questions. Moreover, we are going to see what kind of questions do come from political science as well.
and then we'll continue with more of this chapter. Here, I hope you all are very clear with the arrangement of French society. Further, we are going to study about the people, the philosophers in our upcoming video. Till then, stay tuned, subscribe, share, and like my video.